Hello guys, this is your KP Sir Krishna Prakash. I hope your GATE 2023 exam went well. But most of the students are sending a lot of messages regarding to make a video on GATE 2023, especially my opinion from the questions I have received from students, and also what is their next plan, whether GATE 2023 really tough, really they have not followed the regular pattern of GATE examination, whether the weightage is not according to regular pattern, or else questions are tricky and lengthy, or more MSQs given. So, if you want to know, watch the video till end for all your questions and queries. Whether you only feeling the GATE 2023 is tough, or other students also feeling 2023 GATE is tough, or really is it tough, we can decide today by this video. Okay guys, keep on watching the video. So, first of all, when we discuss regarding the weightage pattern, so will the weightage pattern as usual from the all IITs GATE previous year comparatively, comparing with other IITs, will it followed accurately? So we will check what is the pattern given, then we will discuss whether it is followed or not followed. So this is the forenoon session paper pattern. So when it comes for forenoon session, as usual our regular subject geotechnical 16 marks, as usual any exam geotechnical engineering will come 16 marks, no doubt, 15 to 16, environmental 11. So regularly any analysis of GATE sessions, any indicator or any as per any IIT GATE weightage pattern, 15 marks for geotech, 12 marks for environmental, 27 by 2 subjects, geotech as well as environmental, 27 marks. So see this one, 16 plus 11, 27, pattern is followed, weightage, regarding weightage I am saying. But here the transportation, they have not followed the weightage. Because the transportation we are expecting up to 9 marks, but they have given in morning session 6 marks. Strength of material 7, FM plus OCF 7, structural analysis. Yes, they increased some 2 marks extra. Whatever 2 marks taken from transportation, they added up in the structural analysis. Generally it is 8 to 9 transportation. Structural analysis is 4 to 5. That marks whatever they have taken out from transportation, they have added up into structural analysis. Yes, obviously you are having a doubt. CPM PERT or construction management, 0 questions. We have generally 3 marks from CPM PERT or construction management. वहाँ से ले लिया, इधर 1 mark add किया, hydrology में 1 mark add किया, और they have been added 1 mark to engineering mechanics. Generally CPM PERT और construction management से 2 से 3 mark मिल जाएगा हमको. ये 2 से 3 मार्क लेके हाइड्रोलॉजी, इन जनरल हाइड्रोलॉजी इज कमिंग फॉर 4 मार्क्स, बट नाउ दे हैव बीन गिवन 5 1 mark extra, and mostly engineering mechanics sometimes they will skip. So now steel से 1 mark, engineering mechanics से 1 mark, 2 marks मिल गया. Remaining as usual, surveying 4 marks, RCC 4 marks, building material 1 mark. So खुद से as for the analysis, just a small variation, instead of giving a huge weightage to transportation, they reduce the weightage. Those who discussed about, those who thought about transportation, who have a lot of hope on transportation, for those students it is really disappointing. Then when we move on to next paper 2, afternoon session. In the afternoon session, as usual, again, geotechnical engineering, 16, environmental 12, transportation 7, SOM 6, FM plus OCF 7,
structural analysis 5, hydrology 5, geomatics, RCC, irrigation, steel, no building material and CPM part. So खुद से हम बात करने के लिए, when we talk without considering this as a overall view of morning session as well as afternoon session, हम पूरा पेपर का बारे में बात करने के लिए हमको ऐसा लगेगा. देखो, so any session related to any paper weightage session, whenever any teacher is going to talk about gate weightage, हम कभी भी ऐसा बात करेगा ना, मैथ से 13 मार्क्स, यस 13 मार्क्स आ गया, एप्टीट्यूड से 15, यस आ गया, जियोटेक से 15 और 1 एक्स्ट्रा मिल गया हमको, एनवायरमेंटल से 12, 11 से 12 मिल जाएगा, 11 to 12 मिल जाएगा एनवायरमेंटल से, हाइड्रोलॉजी से 4. So this time they have given additionally 1 mark extra. So when you take this overall, as usual, any teacher or any gate paper weightage discussion, so the teachers will say you 5 subjects. We know that 5 subjects: math, apti, geotech, environmental, transportation. Okay, आप transportation कर लिया, transportation का प्लेस में हम लिख दिया hydrology. Okay, TE. So your expectation is 9 and they have given 6 to 7 marks. So maybe this is reducing. So when you take this 30, 43, 53, 55, around 60 marks from these subjects, and when you have completed this TE, you are getting 66 marks overall. It may be paper 1 or it may be paper 2. By just completing 6 subjects, you are going to get 60 to 66 marks. Sorry, 66 marks, 65 to 66 marks. So ये पेपर पैटर्न भी फॉलो किया, कुछ भी नहीं गलत किया. रेगुलर पेपर पैटर्न दे हैव फॉलोड, एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन 2 से 3 मार्क. एंड ओ भी लिख दो, ओसीएफ से 3 मार्क आ गया, एफएम छोड़ो, सीपीएम पर्ट से 0. दिस इज ओनली अनएक्सपेक्टेड. This is only unexpected. Okay, you worked hard. Are you really worked hard for CPM part? बताओ. Just 20-25 hours में 3 मार्क के लिए काम किया. सिर्फ ये 3 मार्क नहीं आ गया. So you are worrying a lot. अरे no question from CPM part. What you are doing in the given questions of 65 to 70 marks as usual as expected. Because irrigation से 2 मार्क आ गया. Total 70 marks came, na? Total 70 marks came. Please understand this. From these subjects: geotech, environmental, math, apti, transportation, hydrology, OCF, irrigation. ये पूरा खत्म करने के बाद आपको 70 मार्क्स आ गया. देन स्ट्रक्चरल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी, स्टील, एफएम एज यूजुअल रेगुलर वेटेज. और सर्वेइंग भी ऐड करो इधर. सर्वेइंग ये ऐड होने के बाद +4 मार्क्स, 74 हो गया रे बाबा. सो हाउ यू वर्कड? छोड़ के, स्ट्रक्चरल छोड़ के, वी फील ऑलवेज स्ट्रक्चरल इज डिफिकल्ट. आर यू केपेबल ऑफ गेटिंग दिस 74 out of 74? Are you simply blaming IIT Kanpur that they have not followed regular pattern? Obviously, खुद से, as per my analysis, to be frank, they followed regular pattern. The only mistake they did is no question from CPM part, just 2 to 3 marks after working for 20-25 hours, not more than that. They have stick on to the regular IIT gate pattern only. आपसे मिस्टेक किया, आपका आंसर नहीं आ गया, आपका मार्क्स कम आ रहा है. IIT कानपुर का बारे में कुछ डायरेक्टली ब्लेम मत दे दो. आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर पैटर्न. पेपर
वेटेज पैटर्न का बारे में बात कर रहे हैं गाइस। मे बी इट इज हर्टिंग बट दिस इज द टाइम वी नीड टू थिंक ट्रांसपेरेंटली, जेन्यूनली, हॉनेस्टली, बिकॉज जनरली पीपल, if they are getting less marks, if they are going to fail the exam, if they are going to not succeed in any event, any of the aspect, simply blame और किसी को दे दो, पूरा काम आप ले लो, सक्सेस आने के बाद पूरा काम आप ले लो, पूरा का क्रेडिट आप ले लो, फेल्यूर आने के बाद, मार्क्स नहीं आने के बाद ब्लेम किसी और का बारे में छोड़ दो। ऐसा मत करो। रियल जेन्यून एनालिसिस, हॉनेस्ट एनालिसिस चाहिए हमको। क्यों? Because this is not end of your journey for competitive exam preparation. ये एनालिसिस से खुद से आपका नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा, हाउ टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स, हाउ टू ओवरकम द वीकनेस, हाउ टू ओवरकम द नेगेटिव मार्किंग, हाउ टू ओवरकम द लेस मार्क्स, ये आपको होना चाहिए। तो आप आपका दिल से सोचो, एक बार दिल से सोचो, रियली IIT कानपुर नॉट फॉलो द मार्क्स पैटर्न? नो, it is following the regular pattern. The one and only mistake they have did, no CPM PERT questions. So as per regular weightage of GATE, IIT Kanpur is followed. I am talking about question weightage pattern, not about level of questions. We will talk level of questions का बारे में बात करेगा। Yes, first of all, before talking about level of questions, is afternoon paper, forenoon wala, to be frank, very clear, forenoon morning session, all questions stick on to the syllabus within the regular pattern. थोड़ा सा ब्रेन यूज करना चाहिए। गेट, whenever I take a session regarding GATE, whenever I talk about how to crack GATE, कभी भी हम ये भी बोल रहे आपका दिमाग यूज करना चाहिए, बस ब्रेन से काम करना चाहिए, कॉमन सेंस अप्लाई होना चाहिए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस दिएगा, नॉट ओनली IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, कोई IIT से गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सो ये समझ करने के बाद आपका गेट का बारे में पूरा समझ हो जाएगा। आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में एप्टीट्यूड वाला ओरिएंटेड क्वेश्चंस दे रहे हैं। सो थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा मॉर्निंग पेपर में। क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चंस, वेटेज, एवरीथिंग फॉर फोरनून सेशन स्टूडेंट्स, इट इज एज परफेक्ट एज रेगुलर गेट पेपर। डोंट ब्लेम IIT मॉर्निंग सेशन फोरनून स्टूडेंट को। कोई डिमांड करने के लिए IIT कानपुर का बारे में ब्लेम देने के लिए कोई राइट नहीं था। फोरनून सेशन पेपर बहुत आसान से हो गया, ट्रिकी पेपर था और रेगुलर गेट पैटर्न में था, एंड मॉडल्स आर आल्सो रिलेटेड टू रेगुलर गेट मॉडल, नॉट एट ऑल न्यू मॉडल्स, ऑल फ्रॉम आवर नोट्स। हाइड्रोलॉजी ले लो, एनवायरमेंटल ले लो, जियोटेक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया मॉर्निंग सेशन में, बट स्टिल क्वेश्चंस आर फ्रॉम आवर नोट्स। और इरिगेशन डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, इरिगेशन से, ओपन चैनल फ्लो से डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आ गया आपको, बिल्डिंग मटेरियल से सिंपल वर्कबिलिटी क्वेश्चन। अरे क्वेश्चंस आर इजी, इवन स्ट्रक्चर्स आल्सो they have not tried new in the forenoon session. They followed regular pattern. Some question models of ESC, some question models of GATE they have given in structures, structural analysis, RCC as well as steel. Even geotech some lengthy question, but still previous GATE models only, not at all new model tried. Just थोड़ा सा tricky दिया बस. So forenoon session वाला, you don't take advantage. Afternoon session is going tough. So you also say our paper is also tough. ऐसा मत बोलो रे बाबा. You remember this, forenoon is as usual as regular pattern. Coming to, yes, we will check afternoon paper. Is afternoon paper really tough? खुद से बात करेगा, दिमाग दिल से बात करेगा, honestly, genuinely बात करेगा, surely, surely ये genuinely बात करेगा. चलो आफ्टरनून पेपर में क्या हो गया बात करेंगे. क्या हो गया? दे हैव गिवन
around 3 to 4 match the following questions. Even morning paper also, but some match the following questions in the afternoon paper. Students felt that match the following is difficult. बताओ, हाइड्रोलॉजी में पेनमन्स इक्वेशन, हॉर्टन्स इक्वेशन, मस्किंगम मेथड, इज देयर एनी न्यू इन इट? हर एक मेथड का बारे में आपका नोट से आ गया, हो जाएगा? हाँ, यस आर नो? बताओ। हाइड्रोलॉजी में एक मैच द फॉलोइंग, हाइड्रोलॉजी से एक मैच द फॉलोइंग, वन मैच द फॉलोइंग, वन क्वेश्चन। एनवायरमेंटल से दो चीज आ गया, एनवायरमेंटल से दो चीज आ गया। सो वन, व्हेन वी डिस्कस अबाउट वन मैच द फॉलोइंग, just check the options. Easily you can identify. They have given, I think, flocculation, charge neutralization. ये लिखने के बाद all option eliminate हो जाएगा। One match the following में options देखो, they have given flocculation and this flocculation is related to charge neutralization. No option is having out of 4 this matching. Remaining 4 नहीं देखना पड़ेगा. They have given flocculation, reverse osmosis, adsorption, like this they have given. No need to check all this. If you know flocculation is related to charge neutralization, पूरा match the following हो गया आपसे. Yes, 100% obviously this match the following is very very easy for you. Who told it is difficult? और second match the following ये ले लो, second match the following में they have given carbon monoxide. What the carbon monoxide will do? Respiratory problem. You know it ना, carbon monoxide binds with hemoglobin, carboxy hemoglobin form हो जाएगा, respiratory disorder मिलेगा। ये find out करने के बाद वो भी मैच द फॉलोइंग हो जाएगा। सो ऑल द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी। इफ यू फाइंड वन इजी ऑप्शन टू मैच, रिमाइनिंग एलिमिनेशन से खत्म हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, नोवेयर इट इज ट्रिकी। यस, यू आर शाउटिंग अबाउट इट, आई नो, MSQs. So this MSQs around 10 questions students are saying after final paper is released, we came to know. I accept if this many MSQs are coming, that too. The tough MSQs are there from environmental, air pollution, solid waste management. Yes, Asan, it will be a difficult level if you are thinking about this many MSQs. Okay, if we think about the difficulty level of this many MSQs, okay, I can give, including MSQs, some tough questions. Pattern is, don't say again, pattern as per regular pattern, question number, weightage, everything is as per regular pattern. Geotech not tough. To be frank, hydrology never tough in this paper. OCF direct 1 mark is 1 formula, 2 marks is 1 numerical, easy from directly from the notes. Structural, as I have taken opinion from my fellow educators, structural also just 2 marks question, 1 2 marks question is difficult. Remaining structural भी हो जाएगा. I have seen FM questions, pressure measurement, fluid statics से एक pressure measurement question आ गया, वो भी आसान था. When we take environmental, yes, you are shouting environmental. Lapse rate आ गया ना, direct straight away question, lapse rate, you can solve it. And BOD 5 by TOC, you know how to find BOD 5, you know how to find TOC. इनका ratio, that is also easy question. When you take about environmental in afternoon paper, that is also easy question. Yes, there are some theory questions, MSQs are tough. So that is why overall I am taking MSQs plus tough questions. छोड़ दो, 20 marks छोड़ दो. I am giving 20 marks for this MSQs and tough question. Remaining 80 marks कहाँ चले गए रे बाबा? आप से खुद से क्वेश्चन करो. I am
I am not at all blaming anyone. You think about yourself. You are going to question yourself. Okay, 20 marks or 25 marks you can give, they are tough. Then what about 75 to 80 marks? Where this 75 to 80 marks? 100% not at all tough the paper is. Afternoon paper. Could say I am giving 20 marks maximum for MSQs as well as tricky questions and somewhat tough questions. Math thoda tough ho gaya. Okay, I agree, math thoda tough ho gaya. What about remaining 75 marks? ये कहाँ चले गए रे बाबा बताओ, ये कहाँ चले गए? रिमाइनिंग 75 मार्क्स कहाँ चले गए? सो इनका बारे में हम बात करना चाहिए ना. यू हैव टू थिंक अबाउट दैट 75-25 टफ हो गया, चलो. सो आउट ऑफ 75 यू कैन गेट एटलीस्ट 50, 55, 60 मार्क्स if you are really working hard. This is very, very important. You remember it. So, before saying the question paper is tough, you please remember this. How many subjects you prepared perfectly? Have you finished 100% syllabus? How many marks you finished the syllabus? Please tell me this. Some students not at all prepared maths. Some students पूरा का पूरा structures maths छोड़ के आ गया. Some students सिर्फ important geotech, environmental, transportation, apti हो गया, remaining छोड़ के आ गया. So you prepared for maximum 50 to 60 marks and went to exam to attempt and to get top rank. Huh? Now you are talking about top rank, re baba. You prepared only 50 to 60 marks. So as I received messages, so many messages from the students who prepared for 50 to 60 marks and they are saying they can get 45 to 50. So now tell me, you prepared for 50 to 60 and you are saying you are going to get 45 to 50. Yes, if you take the percentage, you are getting around 80% marks. His paper is really tough. If you are preparing for 100 marks and you are getting 50, you can say paper is tough. You have not at all prepared for 100 marks. You prepared maximum, kam se kam maximum 60 marks and you are getting 45 to 50 and that is 80%. Paper is not at all tough. Just as you not yet finished the entire syllabus. समझ आ रहा है? पूरा का पूरा 100 syllabus खत्म नहीं हो गया. That is why you are saying it. Then you are asking, sir, what about the students who finished the syllabus? Yes, I am coming to them. I got messages from the students who finished 100% syllabus. Those who finished 100% syllabus, everyone is going to say me they are getting 70 above. Yes, if you finish the syllabus, 100 marks को 100 marks syllabus PDF डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके हर एक टॉपिक अंडरलाइन करके चले गए. पूरा पेपर में पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद एग्जाम अटेम्प्ट किया. इनको खुद से 70 to 75 मार्क्स आ गया. अरे बाबा, ऑल इंडिया लेवल गेट एग्जामिनेशन रिटन बाय 1 लाख स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 20 to 25% टफ होना चाहिए, ट्रिकी होना चाहिए. नहीं होगा तो हर एक आदमी दिएगा, हर एक आदमी क्वालिफाई हो जाएगा ना. सो क्वेश्चन योरसेल्फ whether you finished the total syllabus or not, whether you completed all the subjects or not. Only you take a paper. My suggestion, take a paper, write list of subjects completed, weightage and how many marks you are getting. I challenge you, bet you, from the completed syllabus, surely you can get 80% marks for it, for you. So completing the number of subjects, the entire syllabus will make you to go to top rank. That is only important. Without finishing the entire syllabus, without completing high weightage subjects, without completing full,
100 मार्क्स को आपका प्रिपरेशन नहीं हो गया, आपका प्रिपरेशन 50 से 60 मार्क्स को हो गया। आप टॉप रैंक एक्सपेक्ट कर रहे, 70 मार्क्स नहीं आ रहे, कैसा आएगा रा बाबा, बताओ। देन so is any questions are out of syllabus? Really batao? Yes, we will talk about it. So most of the students, they send me messages, they sent me questions, and I have seen questions. We have done question paper analysis also. So 2 subjects they are feeling tough. Remaining as per the syllabus, all the subjects as per the syllabus, as per regular model of questions, no new model, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस दिया, और no new model of question, no tricky question, but 2 subjects. What are those 2 subjects? Maths and EE, environmental. This is the opinion from students, not from me, because I have not given the exam. You only given the exam, you know it. Remaining, they are talking lengthy. Anyway, you are not at all ready to attempt 65 question. Some 10 questions lengthy होगा, 5 minutes लेने के बाद कोई जरूरत नहीं था. You need the patience to write, to solve, to derive and to get the answer. 10 questions 65 में सिर्फ you are ready to attempt 50 question. ये 50 में 10 क्वेश्चन लेंथी हो गया, होने के बाद क्या हो जाएगा रे बाबा, 1 घंटा ये 10 क्वेश्चन को दे दो, रिमाइनिंग 40 क्वेश्चंस को 2 घंटा दे दो, हो जाएगा खत्म एग्जाम. सो जियोटेक और थोड़ा सा स्ट्रक्चरल से लेंथी क्वेश्चन आ गया, इनका बारे में सोचने का जरूरत नहीं था. क्या है देन, व्हाट अबाउट रिमाइनिंग? द 2 सब्जेक्ट्स द स्टूडेंट्स आर फीलिंग रियली टफ क्वेश्चंस केम. Maths, environmental. Math, that is purely depending upon how deeply you are studying, how your concepts are understanding, how your basics from +1, +2 maths are strong. So आप खुद से मैथ्स बीटेक सब्जेक्ट खत्म करने के बाद, सॉल्व करने के बाद इधर आ गया, सिर्फ मैथ्स का बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होगा, यू फील इट एज ए टफ. This is from the opinion of one of my friend who taught math in our academy. So student को math background +1, +2 में अच्छे हो गया, उनको आसान हो जाएगा. The students who came from diploma background, yes, truly, really, it is a tough mathematics. Those who came from diploma background, yes, but in that also, please understand, 13 marks में सिर्फ 4 से 5 मार्क टफ हो गया. यू हैव रिमाइनिंग 8 मार्क्स ना, 5 वी कैन गिव टफ, यू कैन अटेम्प्ट रिमाइनिंग 8 मार्क्स. ओके, सो हैव यू अटेम्प्टेड इट? ये बात को एक बार सोचो. 8 मार्क्स आसान हो गया, 5 मार्क्स टफ हो गया. आप ये 8 मार्क्स पूरा का पूरा फुलफिल किया? बताओ, एक बार सोचो. आपका प्रिपरेशन कैसा हो गया, कौन सा इंडिकेटर से हो गया, मैथ आपका कितना काम किया, ऑल PYQ सॉल्व, हाउ योर मैथ इज स्ट्रांग 10th +1 +2, दैट डिसाइड्स टोटल 13 से 13 निकलने के लिए. देन कमिंग टू अवर फेवरेट सब्जेक्ट, आपका KPSR सब्जेक्ट. दिस टाइम इट वाज ए बिट टफ because of MSQs, especially from the topics of air pollution and solid waste management. So these 2 out of the box questions, completely out of the box questions. Morning session में 2 MSQs completely out of the box. Afternoon session में भी 2 MSQs which are completely out of the box. No doubt about it. This is not your fault. This is not any other fault. IIT कानपुर खुद से दिया out of the box questions. But if you can try maximum mixing depth question, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो. एयर पोल्यूशन से आ गया मैक्सिमम मिक्सिंग डेप्थ क्वेश्चन.
ऑप्शन एलिमिनेशन में चलो हो जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ये फ्यूल का बारे में, रेसिड्यूअल फ्यूल सिस्टम। सो फॉर दैट आल्सो यू रीड द स्टेटमेंट, अंडरस्टैंड लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, you can eliminate which are not suitable, you can give remaining, that will be perfect हो जाएगा। but I told you so many times, MSQs देने के लिए two required, one is a good conceptual knowledge, second one is हमारा common sense। ये थोड़ा सा common sense, if you take that residual fuel power, in that residual fuel power what is going on, they are asking inorganic matter never give the fuel, eliminate that option। so like that another option also there, you can check properly, you can eliminate the option, आपको MSQ में आंसर मिल जाएगा। but still, so I agree, so 2 questions of MSQ remaining are easy, 2 questions are MSQ are difficult। then what about numerical, ये चीज बताओ। forenoon session में any new questions given, please tell me। solid waste management, energy studies, खुद से हमारा नोट से आ गया energy studies। here you are shouting, I know, no BOD question, no sedimentation question, no quality of water question। अरे बाबा, हर एक साल रेगुलर पैटर्न फॉलो किया, because students are preparing those topics and coming to exam, but still you are learning entire syllabus, you know solid waste management, energy study, total energy discarded on dry basis, given वाला क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आ गया, आप शाउट कर रहे बीओडी नहीं दिया, सेडिमेंटेशन नहीं दिया, सेटलिंग वेलोसिटी नहीं दिया, कार्बोनेट हार्डनेस, नॉन कार्बोनेट। अरे हर एक साल एक क्वेश्चन भी देने के बाद एवरी स्टूडेंट कैन आंसर, बट द वन हु फिनिश्ड द एंटायर सिलेबस विल बी द रैंकर। सो एनवायरमेंटल में थोड़ा सा चेंज बदल हो गया, ये बदलने में दिस वन 2 मार्क्स यू कैन इजीली गेट, टोटल एनर्जी ऑन ड्राई बेसिस। सेकंड वन कोयागुलेशन से आ गया, मालूम था कोयागुलेशन से P इज कांस्टेंट, P इज इक्वल टू G स्क्वायर V म्यू V। P is equal to G square mu, 2 conditions of mu given, you can consider G square into mu constant, then you can write G1 square mu1 is equal to G2 square mu2। ये क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप ले लो, P is equal to power is equal to G square into V mu, G1 square mu1 is equal to G2 square mu2। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? Whatever questions numericals given in environmental 2 marks questions, those are the easiest question। दिमाग सोचो, ट्रिकी होगा, थोड़ा सा ट्रिकी, दिस इज सिंपल क्वेश्चन। yes or no, please tell me, this is very easy question, हो जाएगा ना आपसे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एनर्जी स्टडीज, एंड दिस वन कोयागुलेशन, हमारा नोट्स में कितना बार सॉल्व किया हम, P इज इक्वल टू G स्क्वायर म्यू V। बताओ प्लीज। ठीक है, हम आफ्टरनून सेशन के बारे में बात करेगा। सो स्टूडेंट्स आर शाउटिंग, सर आफ्टरनून में टफ आ गया। टफ आफ्टरनून में कहां से टफ आ गया रे? टू मैच द फॉलोइंग, खुद से हो जाएगा 4 मार्क्स। टू मैच द फॉलोइंग, आई टोल्ड यू ऑलरेडी प्रीवियसली, खुद से ऐसा हो जाएगा। इफ यू नो फ्लॉक्युलेशन, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। इफ यू नो कार्बन मोनोऑक्साइड एस्फिक्सिएंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, वी नो सल्फर इज रिलेटेड टू लंग डिसीजेस, वी डिस्कस्ड इट इन एयर पोल्यूशन। सो 2 क्वेश्चंस 4 मार्क्स हो गया। टू मैच द फॉलोइंग 4 मार्क्स हो गया। सेकंड वन लैप्स रेट क्वेश्चन, लैप्स रेट हो जाएगा ना, लैप्स रेट क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलेगा ना आपको डायरेक्टली। लैप्स रेट फार्मूला यू नो, T2 minus T1 by Z2 minus Z1, डायरेक्ट सिंपल लैप्स रेट क्वेश्चन। और मॉर्निंग सेशन में ये भूल गया, मॉर्निंग सेशन में एयर पोल्यूशन यूनिट कन्वर्शन में एक क्वेश्चन आ गया, दैट 2 मार्क्स आल्सो यू कैन ऐड इन द मॉर्निंग सेशन। नथिंग न्यू। देन कमिंग टू दिस BOD 5 by TOC,
and only the thing you can know, BOD5 is 68% of ultimate BOD. COD is the number of carbon molecules into molecular weight. How many questions we solve for TOC? Simple na? 68% of ultimate BOD upon number of carbon molecules into molecular weight. So that will be finishing your BOD5. देखो 2 मार्क आ गया इधर. And morning session में एक क्वेश्चन दिया आपको, MSQ मालूम था? Which of the following are viral diseases? हाँ? You can identify the viral disease. What are viral diseases easily? And 3 MSQs in afternoon. In that 3 MSQs, one is easy, 2 difficult. So total as a conclusion, so very clear that environmental में सिर्फ दोनों सेशन, हर एक सेशन में 2 MSQs only difficult. This is only conclusion environmental से. Remaining everything from the notes, I challenge you check each and every word, each and every point from our plus class full length notes only. Nothing new. Hydrology, same whatever we solved in the class came. Irrigation as it is came. I discussed and match the following: super passage, aqueduct, siphon aqueduct. One question frame. Top 10 questions of irrigation I have done na. Same one question came super passage का बारे में. And morning session में one question. Delta and B given, area given. So first we are going to find out duty, then we find out discharge area by duty. Same question, top 10 questions में हम top 10 questions of irrigation. The 10 questions if you learn, you can solve irrigation from GATE 2023. No doubt. Same top 10 questions of hydrology you can do. GATE 2023 hydrology questions you can finish. So the only problem is for the students maths and environmental. So IIT कानपुर को ब्लेम करेगा, आपको ब्लेम करेगा, कैसा हो जाएगा? प्लीज जेन्युइन एनालिसिस करो गाइस, प्लीज आप खुद से दिल से जेन्युइन एनालिसिस करो, कहां मिस्टेक हो गया. सो ब्लेमिंग समवन, थ्रोइंग द मिस्टेक्स, थ्रोइंग द फेल्यूर टू अदर, continuing the life. So every common man can do. I thought you are not a common man. You are the one who is going to learn from the failure, learn from the mistake. So you just make a list of how many subjects you finished for 2023, how many marks weightage is coming from that. From that, how many marks you are getting. Are you getting 80%, 85% or not? You check it out. You are in a correct path to go. That's it. So without preparing for 100 marks, writing an exam and feeling that you are getting 40, 45 and simply blaming IIT Kanpur, don't worry. Don't say this. Please, you finished 60 marks, you are getting 45 marks, good. You finished 100 marks, you are getting 75 marks, good. So first, for how many marks you have prepared, how many subjects you completed, how many marks you are getting out of that completed subjects. Analyze yourself. That only gives the genuine result. Okay sir, ये होगा तो होगा, क्या करेगा अब हम क्या करेगा? So what's next? So regarding this what's next, I am going to take one special class session. हर एक स्टूडेंट से माइक पे बात करेगा, whoever it may be plus class student, free class students, iconic student, irrespective of it. हर एक स्टूडेंट माइक पे लेके इनका खुद से इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. टुमारो आई एम गोइंग टू डू द सेशन. आई विल सेंड द लिंक इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल. हमारा केपी सार स्टूडेंट्स इज अवर टेलीग्राम चैनल. ज्वाइन करो, आपको लिंक मिल जाएगा. आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? गेट खत्म हो गया. गेट खत्म होने के बाद आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है, आपका मार्क्स कैसा आ रहा है, इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट को डिफरेंट हो जाएगा ना. एक स्टूडेंट 3rd ईयर में था, एक स्टूडेंट 4th ईयर में था, एक स्टूडेंट 2 साल हो गया और एक स्टूडेंट सिर्फ अभी खत्म हो गया. और मार्क्स एज वेल एज क्वालिफिकेशन थिंग, एवरीथिंग वी विल डिस्कस. कल स्पेशल क्लास सेशन में हो जाएगा इनका बारे में.
So stay tuned to our Unacademy special classes. If you want the link, join our Telegram channel, KPSR Students. Going forward, for those who are preparing for 2024 GATE and ESE, I am launching the full-length subject Fluid Mechanics, which is the best subject to start your journey for GATE and ESE 2024 as well as 2025. Because this is the basic subject which is required to fulfill needs of all water related subjects. This 17th at 1 p.m. I am going to start Fluid Mechanics. I am there with you. We can continue our journey for 2024-2025 and fulfill our dreams for GATE 23 and 24. So you have new offers in Unacademy, that is up to 30% off on Unacademy subscription. You will get 32,982 rupees. You will get 14 months Unacademy subscription for GATE and ESE. Around 30% off you are getting. And guys, you know, we are going to launch our offline center at Delhi. All top educators of Unacademy are going to teach offline classroom program. For the existing Plus subscribers, you have a special discount. For the new learners who are going to take first 50 students, you get a special discount. And those who have taken a subscription in classroom program, they will get a 1 year plus subscription free. So do guys make this spread, and our universal code, you know, KP Civil. KP Civil se join karo. Let's crack it guys.